regarding class 6, तो yesterday we have done a terrestrial habitat in digi. I hope आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट का, कि टेरेस्ट्रियल हैबिटाट क्या होते, कौन कौन से होते हैं. आई थिंक हमारे डेजर्ट्स तक हुआ था, तो वी विल स्टार्ट विद माउंटेन रीजन्स टुडे, ठीक है. देन विल कम टू इक्वेटिक हैबिटाट. टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में हमारे डेजर्ट्स तक हुआ था. वी विल स्टार्ट विद माउंटेन रीजन्स. ओके, वन ऑफ द टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटाट इज ग्रासलैंड्स. In the Terai Dua savanna grasslands, this region receives seasonal rain. That's perfectly right. These animals have adapted themselves to the surroundings. Most of the grassland animals have the ability to run very fast, whether it is to catch prey or to protect themselves from predator. Herbivorous animals have strong teeth to chew tough grass. Carnivorous animals camouflage themselves with the surrounding while waiting for their prey. Yes, it definitely is. The baobab tree, for example, has a flexible body which prevents it from breaking during strong wind. This is one reason why the wood of this tree is used to make homes or bus shelters. The acacia tree, on the other hand, has the ability to save its leaves from the giraffe while releasing a bad-tasting chemical into the leaves, making it inedible. Now, next type of terrestrial region is mountain region. We are now at the lower hills of the Kanchenjunga Mountains. This region is normally cold and windy, and at times receives snowfall during winters. Bingo! Since the weather is cold and windy, the animals have a thick fur coat to keep them warm. As we move higher in mountains, the oxygen level reduces. So animals like the yak have large chest and lungs to adapt themselves to the low oxygen content in the mountain. Many trees in this region have a cone-shaped structure with sloping branches. The leaves of these trees are like needles. This helps the rainwater and snow to slide down quickly. Let's look at what we have learned so far. The types of terrestrial habitat are forests, desert, grassland, and mountain region. तो फॉरेस्ट में एनिमल्स और प्लांट्स का
जाता है उनका कलर, ताकि उनके प्रे और प्रेडेटर्स को पता न लग पाए। ठीक है, प्लांट्स की ड्रिप लीव्स होती हैं और शॉर्ट ब्रांचिंग रूट्स होती हैं। उसके बाद ग्रासलैंड्स का भी यही है, कलर्स हेल्प इन हाइडिंग एनिमल्स जो होते हैं दे रन फास्ट, और जो प्लांट्स होते हैं उनके दे हैव थॉर्न्स एंड बैड टेस्टिंग केमिकल्स टू प्रिवेंट ग्रेजिंग। देन कम्स डेजर्ट, animals are adapted to walk on sand and preserve food, reduce water loss and lives in burrows. Plants, short thorny shrubs, leaves reduced to avoid water loss and stems prepare food. उसके बाद आता है आपका माउंटेन्स का, thick coat of fur, large lungs to breathe and plants are cone shaped, sloping branches होती है उनकी and needle like leaves. Is it clear? तो ये हो गया आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के अंदर। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में हमने क्या पढ़ा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्वेटिक हैबिटाट। Don't miss our popular series, Life Under the Ocean, at 12 noon today. Let's take a look at Annie's experiences as she observes the animals and plants in the various aquatic habitats. Ducks are adapted to live both on land and in water. They are found in freshwater habitats such as ponds, rivers and lakes. They have webbed feet, which helps them paddle underwater. The bones of the duck are hollow, which makes its body very light and helps it to stay afloat. Special structures under the duck's tail produce an oily substance that keeps their feathers waterproof. Animals such as the crocodile, frog and snakes are also found mostly in the same habitat. So the question that comes to Annie's mind is, how do plants hold themselves so firmly in water? The lotus plant grows in stagnant waters in ponds or lakes. It has a long stem with its leaves and flowers formed above the surface of the water. The tuberous roots help to hold the plant firmly to the soil. The stem of the lotus plant is hollow. This helps it move in the water without breaking. The leaves have a waxy covering to prevent it from rotting. Apart from plants like the lotus, there are many plants that are submerged in water. The leaves of such plants are thin and narrow and look like ribbons. This helps them to be flexible in the flowing water.
Hello and welcome to this episode on life under the ocean. Did you know that the Earth is covered 3/4 by oceans? The water in the ocean is warm in the tropical regions while it is cold at the poles. The ocean houses a wide variety of aquatic species, such as the fish, sharks, whales, dolphins, octopus, and many more. How do these species adapt themselves to the ocean? Fish, sharks, dolphins, and whales have streamlined body structures that help them to swim fast in the water. The octopus and squids do not have streamlined bodies. Hence, they stay put on the bed of the ocean and wait for their prey to come close to them. We all know that fish use gills to breathe underwater. Mammals like the dolphin and whale don't have gills. So, how do they breathe? Aquatic species like the dolphins and whales breathe through the blowholes that are located on the upper part of their head. They breathe in air when they come to the surface of the water. Another exciting feature used by fish underwater is the adaptation of camouflage to catch their prey. The shark, for example, has a dark color on its upper body and a light color on its lower body. This makes it difficult for one to spot a shark when seen from above. Similarly, the light color on its body prevents it to be noticed when seen from below. This kind of color shading is known as counter shading. Hello and welcome to this episode on Life Under the Ocean. Let's look at what we have learned so far. The types of aquatic habitat are freshwater and marine habitats. Animals and plants have adapted themselves with specialized body structures to suit the surrounding. So this chapter is basically about habitat and adaptations. ठीक है? तो we are considering the adaptations of few animals and plants, that how are they adapted to live in certain habitats. ठीक है? Here we have studied about aquatic habitat. Aquatic habitat में रहने वाले animals और plants ने किस तरह से अपने आप को adapt कर रखा है वहाँ पर रहने के लिए. ठीक है? अगर हम एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको दे रखा है कि जो डक्स हैं, फ्रॉग्स हैं या क्रोकोडाइल्स हैं, उनके वेब्ड फीट होते हैं जो कि उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद है कि डक्स सीक्रेट एंड ऑयली सब्सटेंस टू मेक द फेदर्स वाटरप्रूफ. जो डक्स हैं वो क्या करती है, वो ऑयली सब्सटेंस सीक्रेट करती है जिससे उनके फेदर्स जो होते हैं वाटरप्रूफ बन जाते हैं. ठीक है? Ducks have hollow bones to keep them stay afloat. Ducks की bones कैसी होती है? Ducks की bones होती है hollow. उसके बाद है fish किस तरह से रहती है? Fishes gill use करती हैं, gills use करती हैं अपनी breathe करने के लिए, सबको पता है. ठीक है? उसके बाद fish, sharks, dolphins and whales have streamlined body to move fast in the water. वाटर में मूव करने के लिए उनकी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन होती है, दैट इज़ उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है. ठीक है? स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप के कारण जो फिशेस हैं वो वाटर में मूव कर पाती हैं आसानी से. ठीक है? उसके बाद शार्क्स यूज द अडेप्टेशन ऑफ कैमोफ्लेज टू कैच प्रे. जो शार्क्स होती है, शार्क्स अपना शिकार पकड़ने के लिए क्या यूज़ करती हैं? वो कैमोफ्लेज
का यूज़ करती हैं। कैमोफ्लेज मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, ठीक है। और हमने जब माउंटेन रीजन्स या फॉरेस्ट के बारे में देख रहे थे तो हमने देखा था कि किस तरह से एनिमल्स उसी कलर में अपने आप को कलर के साथ ही मिक्स हो जाते हैं ताकि पता ना चले कि उनका प्रे या प्रेडेटर्स को कि सामने कोई एनिमल है, ठीक है। तो डॉल्फिन्स एंड ब्लू व्हेल ब्रीथ थ्रू द ब्लो होल बाय कमिंग टू द सरफेस ऑफ द वाटर। उसके बाद जब हम प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो लोटस प्लांट्स हैव ट्यूब्यूलस रूट्स टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। आपने यहाँ पर देखा कि जो एनी थी वो प्लग करने की कोशिश कर रही थी लोटस प्लांट को, बट शी वाजंट एबल टू, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को फर्मली होल्ड कर रखते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन लोटस प्लांट की रूट्स कैसी होती है, इट हैज ट्यूबुलस रूट्स, ताकि वो जो प्लांट है आपका फर्मली ग्राउंड में होल्ड होके रहता है, ठीक है। उसके बाद दे हैव अ होलो स्टेम दैट हेल्प्स देम मूव इन द वाटर विदाउट ब्रेक। उनकी स्टेम कैसी होती है? उनकी स्टेम होती है होलो। फिर उनकी वैक्सी कवरिंग होती है लीव्स पर ताकि लीव्स उनकी रोट ना हो पाए, रोट यानी सड़ ना पाए, ठीक है। उसके बाद plants submerged in the water have ribbon like leaves that move in the flowing water without breaking the plant. So summary में it's clear to you these are the characteristic features that certain animals and plants have so that they can adapt themselves to the certain surroundings. ठीक है। उसके बाद आता है आपका characteristics of living things. Very important. Yippee! I'm